Haley Ganguly, a student of Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the induction program organized by DME Media School. Delhi Metropolitan Education, Noida, is a premier college affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University, approved by Bar Council of India. We feel proud to state that Delhi Metropolitan Education got esteemed NAC A+ accreditation for its continuous excellence in holistic development. I am honored to extend welcome to our guest of honor for today's induction program is Mr. Ajay Kumar, a a senior journalist at Bharat 24. We are also privileged to have Dr. Amrish Saxena from South Asian University as our special guest. Dr. Ravikant Swami, Director of DME, and Dr. Parul Mehra, Head of DME Media School. Let's greet all our esteemed dignitaries with a round of applause. On this auspicious occasion, let us light the lamp symbolizing acknowledge and success. I now request Dr. Parul Mehra to kindly escort our esteemed guest for the lamp lighting ceremony. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. Now, I would like to extend an invitation to Dr. Parul Mehra, Head of DME Media School, to formally open the event with her motivating word and extend a warm welcome to our guest. Honorable guest of honor, Mr. Ajay Kumar, special guest Professor Amrish Saxena, our academic coordinator Dr. Yamini Khullar, my dear colleagues and my dearest students, very good afternoon to all of you. It is indeed a privilege and honor to have presence of Mr. Ajay Kumar, who is a senior journalist and an anchor of repute. Professor Amrish Saxena, veteran in the field of media academics. Thank you, Ajay sir and Saxena sir, for sparing your precious time and joining us for this very important event of our journalism department, Induction Day 2024. I would also officially like to welcome all my students, new batch 2024 and 27, as it marks a new beginning and a new chapter in your academic as well as your professional journey. I am delighted to have you all as a part of our vibrant community. DME Media School prides itself being a hub of creativity, critical thinking, and innovations. We offer blend of theoretical knowledge and hands-on experience with the state-of-art facilities in a form of Studio 62, and thanks to Saxena sir for this. Where we do year-round production, all our students are trained with the industry standards of media and production practices. Expert faculty and enriching curriculum, which is designed with the 4 years BJMC course affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. DME Media School redefines media education with pioneer pedagogies, practices, and training, which is seek to create the world of DME Media School with no limits for the learner's horizons. I know Ajay sir and Saxena sir will agree to me that mass communication is an incredibly dynamic field with an ever-evolving landscape, shaping the way people perceive the world, how stories are told, and how the information is disseminated and shared across the globe. In today's interconnected world, media plays an extreme crucial role in shaping the society's thought, opinion, culture, understanding. As a future journalist, filmmakers, advertisers, PR professional, communications experts, you all will have a power to influence these conversation and build a narrative based on that, but not at the cost of integrity, which I keep on saying to all of you.
But remember, my dear students, your success will be measured not only in the premises of four walls. So it is important to step out from your classrooms and participate in the projects, internship, co-curricular activities, workshops, and take full advantage of what is being offered to you. I also take a pride that DME Media School is one of the top-notch media institutions in the country. And I would like to take a moment to talk about the flagship programs, including International Media Conference ICANN and International Film Festival SIFI, which again I want to thank Professor Saxena for this initiative. And the Convention of Media student Ritika and BG Verghese lecture series, where we keep on doing our regular lectures with an expert and renowned people from the industry. So let me assure you that our journey here will be one of the exploration and discovery based. We are committed to producing the best quality of work in terms of production, writing, and research. Students at DME Media School enters as a learner, but they leave as an industry-ready professional. So once again, I welcome all my new students to the Department of Journalism and Mass Communication, and I'm looking forward that you all will be very transformative in the times to come. Thank you all of you, and thank you Ajay sir and Saxena sir for joining us for this very important event of our year. Thank you. Thank you, ma'am, for your insightful words. Now, I request Dr. Parul Mehra, Head of Department, Media School, to kindly felicitate guest of honor, Mr. Ajay Kumar. Now, I request Dr. Yamini Kullar, Associate Professor and Academic Coordinator, to felicitate Dr. Amrish Saxena. Now, we are thrilled to announce the launch of Journalism at the Red DME, the official digital newspaper of DME Media School. This marks an important step for our students, providing them with space to showcase their journalistic skills and creativity. We extend our heartfelt thanks to the talented students and faculty members whose dedication had made this happen. Dr. Amrish Saxena is a distinguished media communicator, educator, and researcher with a prolific career spanning print, audio, TV, and digital media. He is currently professor at South Asian University. Dr. Saxena held senior position in various media outlets and anchored AIR FM Gold's Market Mantra for 20 years. A pioneer in modern media education in India, he has designed innovation, curricular, and launched media programs as institutions like GGSIPU, MBICEM, WIPS, and DME. His contribution has significantly shaped media studies, marking him as a respected figure in both industry and academia. I request Dr. Amrish Saxena to kindly take the session forward. So it's a matter of delight that this session is happening with Ajay Kumar ji, who is a very seasoned journalist, and I believe, though, you people must be watching different channels, and maybe to many of you it might be difficult to make out his contribution and the work that he has done in the field of journalism, but I believe you all will be benefited by whatever he is going to talk about. For me, it's a very strange feeling because I was there for almost close to 6 years in DME Media School and tried to set up the things which could be treated as a benchmark in media education, right from the international conference which Dr. Parul just talked about, and also the International Film Festival,
which we reached, more than 3,000 films being received from almost 120 countries. So all that has been done. Now the only challenge is to carry it forward, to take it forward. So obviously that responsibility is on the shoulders of the current leaders, Dr. Parul Mehta and her team. And then also the students, because in an educational institution, students are the backbone. And whatever we try to do, we conceive, we plan, it's ultimately to the benefit of students. And in DME Media School, this has always been there, that students have been in the forefront. Because once they learn, they will contribute immensely while they will be joining industry tomorrow. So I believe that legacy has to be taken forward. Now, what all is to be learned while somebody is studying in a bachelor's program of journalism and mass communication, whichever stream or whichever field you might be landing in, right from journalism to advertising to public relations to event management, there are so many categories, sub-classifications, offshoots. So all that is always there, and it's ultimately at the end of the 3 year when you will be completing it, you will decide where you will be finally going. But then the basic things, basic traits which have to be there, and the basic learning has to be there, that you had to be an avid reader. You must be aware as to what is happening around, not only in our neighborhood, but in other parts of the globe. Because the world is such, anything which is happening in Ukraine, anything which is happening in Gaza, affect us all sitting thousands of kilometers away. Whether it's the question of the political developments, whether it's the question of the economy that any country has, it's affected by so many factors, so many such developments which are happening in other parts. So we might be feeling that that's not of our concern, but that should not be the approach in a media student. So you must try to read, you must try to learn as much as possible. And learning has no end, as we all know, and today is the age of technology. And I always say this, that media is nothing but all about technology. Right from the first newspaper, the Hickey's Gazette, which came out in 1780 till date, whenever there was a change in technology, the whole form and shape of media changed. There used to be weekly newspapers which turned out to be daily newspapers when that kind of printing machines were invented. Similarly, when radio came, when television came, from transmitter to satellite to internet, everything is, and the current phase which is completely dependent on internet. And then obviously the artificial intelligence which is impacting every aspect of life. So as a student, you must work on your thoughts, enrich your thoughts, study as much as possible, read as much as possible, try to understand your society, the other societies, and the common threads. And also learn the technology as much as possible so that you can make use of that technology to create the content which you want to create, which are to the larger benefit of the people. So I will not speak much because I am eager to listen to Ajay Kumar ji, because I have listened to him. He speaks so well, and all that makes substance. I'm always there to talk to you, so I'm not taking much of the time of this session, and we will be listening to him, and we benefited by whatever he will be telling you all and us all in this session. Thank you. Thank you, sir, for such a valuable session. We are launching of journalism at the DME. Ladies and gentlemen, we present to you DME Media School's monthly newsletter, Journalism at DME.
Ajay Kumar, a television journalist with a wealth of experience spanning 3 decades, has returned to Bharat 24. He started his career with Aaj Tak and spent 15 years as an associate editor. Thereafter, he was with ABP News as an executive editor for 4 years and 7 years as managing editor of News Nation. He also served as managing editor of India TV for 3 years. Mr. Ajay Kumar brings his experience and seasoned thought process to Bharat 24, where he will host the prime show Mr. Analyzer from Monday to Friday. He joined Bharat 24 in August 2022 as managing editor and is also one of its founding member. I now request Mr. Ajay Kumar to kindly take the session forward. I'm extremely honored to be in front of all of you. Professor Saxena, Ms. Parul, Ms. Kullar, esteemed teachers, and each and every individual who's now embarking on the path of journalism and associated fields. My heartiest congratulations. एंकर कौन बनना चाहता है? हाथ तो उठाइए. ओके, 1, 2, 3, वहाँ पीछे एक छिपा हुआ आदमी दिखाई दे रहा है. 4, 5, 6, ओके. सो एंकर्स, कोई एक मुझे बता सकता है एंकर बनने से क्या हासिल होता है? क्या मिलेगा आपको? क्या खुशी होगी जब आप टीवी स्क्रीन पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, कहीं भी किसी स्क्रीन पर सामने आएंगे? आपको क्या मिलेगा और आप क्या चाहते हैं? इतना मुश्किल भी नहीं है यार. अरे नाम चाहिए, पैसा चाहिए, गली मोहल्ले में घूमे तो हर आदमी पहचानना चाहिए. इसके अलावा भी कुछ चाहिए? यस प्लीज. या देयर शी इज. बोलिए बोलिए, सब सुन लेंगे. इट्स ओके. सर, इस फिल्म को जब मैंने चुना तो एक माइंड में एक चीज़ था कि कॉमन नहीं मरना. लाइक मरे तो ऐसा लगे कि नहीं भाई आंचल झा थी कोई. तो इसीलिए ये लाइन को मैंने चॉइस किया क्योंकि एक वॉइस बनना है. वॉइस बनना है, बट ये नेगेटिव बड़ा सोच है. मरे तो अरे मरोगे क्यों भाई? मरे आपके दुश्मन. ओके, लेट्स सम इट अप. See, when you are budding with new thoughts, energy, and you're embarking upon a new career, you have aspirations, lots of imagination. You have read or understood or seen the world in a different perspective, and you want to achieve something which is different for yourself, each for their own, and the reasons are also their own. But if you look at the skill set that you're about to acquire, what does that empower you with? क्या मिलेगा आपको? You are acquiring a sense whereby you can communicate better, you can communicate effectively, you can communicate realistically through your voice, face, action. Photographs अगर आप लेते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट बनते हैं तो ये है. Otherwise your editing skills, or if you're writing copies for your advertisement, you're enacting. Virtually, what are you doing? You're communicating with a much larger audience than you're sitting here in this room, than your family, than your friends, than your neighborhood. Am I right or am I wrong? So communication is what you're trying to master. So being communicative requires a certain amount of skill sets for which you need to be very vocal, you need to be expressive, and first and foremost, you need to be honest with yourself and with your target audience. अगर आप झूठ बोल के सेंसेशनल हेडलाइन लगाकर कुछ अटपटी बात करके अपने आप को लोकप्रिय बना रहे हैं तो क्या आप लोकप्रिय हैं? यह सवाल आपके सामने रोज दिन है. दिस इज अ क्वेश्चन दैट विल चैलेंज यू एट ईच एंड एवरी मोमेंट दैट यू आर टेकिंग अ डिसीजन. अभी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मेरी अगली लाइन मेरे लिए चैलेंज है कि मैं वो क्या बोलने जा रहा हूं. आई हैव अ राइट टू चूज.
Choose the right words or choose the nefarious words. So I'm making a choice. Are you willing to make that choice? Is the question that you need to ask yourself. And what is the choice that you're making? Is it a choice which is honest about your work, about you, about what you're saying, and to whom you're saying? Or are you just in the business of becoming famous and making money? If you're in the business of becoming famous and making money, trust me, your journey is the shortest possible that you will ever do. झूठ के पाँव नहीं होते. और ये हमें बचपन से जो सिखाया गया ये गलत नहीं है. हम आपस में फ़ोन उठा के बोलते हैं कि हम पार्टी में हैं जबकि हम बैठे होते हैं अपने बाथरूम में. हम क्लास में होने के बजाय कहीं और होते हैं और वो कैमरा चल रहा होता है. But this is not being dishonest to the extent that you're being dishonest with yourself and for the people. Then you're not a communicator. मैं honesty पे कोई ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ. That's not what I am here for. I don't claim to be a very honest person myself. I am not. ज़रूरत और वक्त के हिसाब से आदमी को चीज़ें बदलनी पड़ती हैं. गीता ने भी यही कहा है भाई. धर्म और रिलीजन की परिभाषा अलग है. धर्म का मतलब होता है लार्जर गुड. सो लार्जर गुड के लिए अगर भगवान कृष्ण भी आधा सच बोल सकते हैं तो आपको भी बोलना पड़ेगा. शायद जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे. उससे अगर आप भागेंगे तो शायद आपके लिए मुश्किल होगी. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मौक़ों पर ये चूज करते कि नहीं मैं वो एब्सोल्यूट सच बोलूंगा, लेकिन शायद वो उस समय ज़रूरी नहीं होता है. समाज को, लोगों को, आसपास को ज़रूरी नहीं है कि आप वो सच बता पाएं, लेकिन सच को बताने के तरीके अलग अलग होते हैं. आई एम नाउ जंपिंग ऑन टू समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकली यू. हम लोग जब आपके स्टेज में थे तो हमारे पास बहुत लिमिटेड एक्सपोजर था. सक्सेना साहब विल बेयर मी आउट ऑन दिस. सक्सेना साहब अभी आपको बता रहे थे कि कैसे वक्त बदला है, कैसे कम्युनिकेशन का पूरा मीडियम बदला है. लेकिन जो हम लोगों ने देखा है अपनी जनरेशन में, आप में तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है क्योंकि आपके सामने वैसा था ही नहीं. When I was young, to have a radio was a challenge. You had to take a license from the government of India for which you were supposed to pay 100 rupees a year to have a radio at your home. And radio and transistor are two different things. ट्रांजिस्टर छोटा सा होता था, इतना छोटा सा. एक पॉकेट वाला आता था इतना बड़ा सा, जैसा अभी हम लोग देखते हैं फ़ोन की तरह. और रेडियो ये बड़ा सा होता था जिसमें ग्रीन रंग की एक वार्म बत्ती होती थी. ऑन कीजिए तो उसमें 1-2 मिनट लगता था उसका वो गर्म होने में फिलामेंट को, और उसके बाद वो फिलामेंट ग्रीन लाइन पूरी आगे जाती थी. फिर खर्र खुर्र करता हुआ रेडियो शुरू होता था. और मर्फी के पहले भी रेडियो बनता था. मर्फी बहुत बाद में आया. But all this thing is not there anymore. You don't need it. So you are born into a generation where technology is driving you. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग सब अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे. चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके तो आजकल हम लोग शहंशाह हैं. कुछ भी बना सकते हैं. ईमेल इतने अच्छे अच्छे बनने लगे हैं कि अब तो मुझे ही शक होने लगा है कि किसने लिखा भाई. मेरे कई सारे फ्रेंड्स और जूनियर्स जब ईमेल लिखते हैं छुट्टी के बहाने के लेके तो मज़ा आ जाता है पढ़ के, क्योंकि उन्हें तो लिखना ही नहीं है. आपने 150 वर्ड में बता दीजिए क्या क्या चाहिए, वो सब आपको लिख के दे देता है. 6 ऑप्शन है. सो थिंक अबाउट योरसेल्फ. क्या आपको आपकी ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ क्रिएटिव राइटर? जस्ट थिंक अबाउट इट. आप जो भी लाइन लिखेंगे उससे 2 लाइन अच्छी चीज़ें तो चैट जीटीपी और बाकी सारे तमाम एआई लिख के दे देगा. अगर आप लोग आईफोन यूज करते हो, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे. उसका iOS 18 लॉन्च हो रहा है. रात में कल हो गया. आप लोगों ने अपडेट किया होगा, मैंने नहीं किया अभी तक. बट देयर आफ्टर बाई डिसम्बर व्हेन AI इज इनकॉर्पोरेटेड इन iOS 18, डू आई इवन नीड टू से एनीथिंग और डू एनीथिंग? सिर्फ उसमें कमांड देते जाओ, सब होता जाएगा यार. माई ईमेल इज टेक्सचर्ड, सो व्हाई डू आई नीड एनीथिंग? So communication is being hijacked by a technology
which is drawing its entire inspiration and content from already which is written. Otherwise न्यूयॉर्क टाइम्स वो केस जीतता नहीं जिसमें उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने मिले. आर यू अवेयर? न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल्स पर बेस बनाकर मोर देन 3.8 लाख राइटअप्स के बेसिस पर चैट जीपीटी ने यह समझा कि किस तरह से न्यूज राइटअप्स लिखे जाते हैं. मेरे पास अभी पूरा डेटा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो अभी पब्लिश हुई है अप्रैल में दिस ईयर. आई कैन कोट फ्रॉम इट बट लेट मी जस्ट गो वर्बेटिम ऑन इट. 47% owners of international media organizations do not want to hire copywriters. They don't need to. Because I can get a much better job done from a chat GPT or any AI platform than I can get it done by a writer. 23,000 journalists have been fired in the United States in the past one financial year. 23,000. In total, all over the world, 6 lakh people have been fired who are journalists. So are you looking at a very bleak future? क्या आप ऐसे सिनेरियो को देख रहे हैं जहां पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप कल यहां से पढ़ के निकलोगे तो? सोचने वाली बात है ना? लेकिन ऐसा है नहीं. नौकरियां हैं, काम है, तरीका बदल गया है. Now we need, and the entire communication world needs content creators. And these content creators do not just create content on YouTube, because YouTube is just a platform. As an organization, in Bharat 24, I'm pleased to share with you, we are reducing our television footprints. Because it doesn't make sense. I am posting the same content जो मैं टीवी पर आपको दिखा रहा हूं, वही चीज अगर मैं आपको वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखा रहा हूं तो आप क्या देखेंगे? आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखेंगे क्योंकि वो फ्री है और वही कंटेंट है. लेकिन वही कंटेंट तो सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, 48 घंटे से यही दिख रहा है ना. किसी टीवी चैनल पर कुछ और दिखा क्या आपको? कितनी बहस हो रही है. ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सिनेरियो डी, एक्स, वाई, जेड सब हो रहा है ना. आप में से कितने को दिलचस्पी है इसमें? हाथ उठा के बताइएगा सीरियसली. इस खबर के बाद कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं संडे को, आप में से कितने लोगों ने इसको फॉलो करके ये देखा कि आज कौन चीफ मिनिस्टर बन गया? मैं आपसे पूछूं, इसमें फॉलो करके आप क्या फॉलो करना चाह रही थी? जस्ट एन अपडेट. 48 आवर्स में क्या अपडेट मिला आपको? He has chosen Atishi Right. for that post CM के लिए. उससे पहले एक और 2 नाम सजेस्ट हुए थे. उससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, बट आई नो अतिशी. Right. सो उन्होंने ये कहा था जब वो बाहर आए थे, उन्हें बेल मिली थी. ही सेट कि जितने उन पे चार्जेस लगे थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, करप्शंस के, उन्होंने बोला कि वो रिज़ाइन कर देंगे एंड लेट पीपल डिसाइड कि वो चाहते हैं कि वो CM की पोस्ट पे रहें या नहीं रहें. फिर उसके बाद कई सारे क्रिटिक्स आए. बीजेपी ने बस सिंपली कह दिया कि ड्रामा कर रहे हैं, करना होता तभी कर देते. या ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ. आपके लिए इंपॉर्टेंट था बीजेपी ने क्या बोला, कांग्रेस ने क्या बोला? क्या इंपॉर्टेंट था? ओनली न्यूज़. और न्यूज़ क्या थी? कि लाइक ही इज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज पोस्ट. नेक्स्ट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू? हु इज द अपकमिंग. बाकी क्या था? बाकी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज थी. अटर क्रैप. यस सर. अटर क्रैप. आपकी भाषा बोल रहा हूँ. एब्सोल्यूट बंकम. मैं न्यूज़ कंज्यूम कर रहा हूँ, आप कर रहे हो. अरे भाई मुझे क्यों जानना बीजेपी उसको किस किस मुद्दे पे ऑपोजिशन में बोल रही हो? तो बोलेगी ही, ऑपोजिशन पार्टी है, काम है उसका. डू आई नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग?
Do I need to see a BJP spokesperson with a Congress spokesperson, with a Aam Aadmi spokesperson, with 3 former journalists or already an anchor or a journalist like me talk about it for 10 hours together? Is this what we are here for? Is this communication? I'm sorry, it is not. I am bored. That's why you don't watch TV. You don't watch TV because I don't give you news. My industry doesn't provide you news. We provide you views. And that too not of a channel. That of XYZ political parties, whose views we already know. So am I giving you an extra information? That's why I'm dying. So it is television professionals who are responsible for the kind of suffocation which you feel when you see TV. And when you see YouTube or various other platforms, you see 20 minutes or 15 minutes of one-man talk show, which keeps harping on one line only. If I am supporting Mr. Kejriwal, oh my God, he is God sent. दुनिया के इकलौते मुख्यमंत्री हैं, उनसे ईमानदार कोई आदमी ही नहीं है. उनको तो भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर रखा है, कांग्रेस ने नाक को चने चबा रखे हैं, राहुल गांधी ऐसा है, मोदी जी वैसे हैं. Am I right or am I wrong? दूसरे आदमी को देखो, अरे केजरीवाल तो ऐसे हैं, उनका लिकर स्कैम किया, उनने ये किया, उनने वो किया. खबर कहाँ है भाई? मुझे ये जानना है कि आज अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो क्या दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? मैं बहुत छोटी सी खबर लेकर आपके सामने खड़ा हूं अभी, एंड लेट अस जस्ट टॉक अबाउट इट. और आप मुझे बताइएगा आज शाम कहीं भी किसी टीवी चैनल पर देखकर, क्या दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन में अरविंद केजरीवाल के चीफ मिनिस्टर नहीं रहने से और आतिशी के चीफ मिनिस्टर बनने से कोई फर्क पड़ेगा? जो तमाम स्कीम्स रुकी पड़ी हैं जिस पर एलजी ने साइन नहीं किया है, उसमें से किसी भी स्कीम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की खबर आज आपको मिलेगी? क्या दिल्ली में जो इतना पानी जमा हुआ था उसके बारे में कोई बात करेगा? ऑल द पॉटहोल्स इन दिल्ली, विल एनीबडी टॉक अबाउट इट? Gang war is an open and shut case in Delhi today. It is staring in each and everyone's face. Will anybody talk about it? How many Nirbhayas will have to happen in this country before somebody wakes up and takes a call? How many protests will happen as they are happening as we talk in Kolkata for justice? Will anybody talk about this? Will a change in the chief ministership change your lives? If it is not changing, is it news for you? And if it is not, then what is it that you want? Ask yourselves. You are seeing the most lazy, ineffective, negative, vested interest ridden, and defunct and debunked journalism today. And I have no shame in accepting that I am part and parcel of this defunct ecosystem. We are shameful because we cannot provide anything that we ever thought that we would be able to do. I joined this profession in 1992 as a reporter in Times of India. I had got a fantastic job in US. Under circumstances of the family, I had to stay back because my mother was hell-bent that I should not settle abroad. So I came back. I had to join JNU under compulsion because my parents didn't want me to study further abroad after my graduation. So as a revolt, I joined a profession which my parents hated absolutely. My father was a bureaucrat and he felt कि journalism का मतलब उनका जो basic opinion था, अगर मैं आपके सामने रखूं, he used to say, उन्होंने मेरी माँ को कहा, पहले तो मुझे घर से बाहर निकाला, I don't want a son like him,
एंड द नेक्स्ट ही सेड, तुम्हारा बेटा जो है वो एक बोतल शराब और 2 चप्पल, हवाई चप्पल के लिए चटकाता फिरेगा, उसको पैसे नहीं दूंगा मैं. That was how bureaucracy used to view journalists in the 70s. Not much has changed, by the way. If you go to the bureaucracy, and if you have family and friends within the bureaucracy, they'll still look upon you as somebody who's sold out. As somebody जिसको एक drink पिला दो काफ़ी है. I'm sorry, I shouldn't say all this in a school, but that's what it is. But there's much more to us. Much more to us. People respect us not because we are big names. People respect us because what we have done and how we have achieved it. 3 years into the profession, I went to cover a Naxal story in Bihar. Naxalism then used to be prime in Bihar, and there used to be a constant struggle between the Red Army and the Ranbir Senas of the like. And Gaya used to be an epicenter, Jahanabad specifically. I was doing a story for Newstrack, which I was then part of. We used to produce 1 story in a month. It was a monthly magazine, video magazine. I was asked to board a train, which I obviously used my father's contacts for this story. Privileged. And when I boarded the train, just to reinforce onto me as to how violent the Red Army can be in the retribution of so-called justice against landlords and feudal structure, they decapitated 2 individuals in front of me on a running camera. That was 4 years into journalism. And had blood all over me, drenched in blood. From bottom till here. कहीं 1 inch ऐसा नहीं था जहाँ पे खून नहीं था. I puked in the train. How many times? I don't know. I jumped into a pond to wash myself. And for the next 2.5 years, I had to take treatment to get off the feeling that I have blood on my body. But we aired the story. And action happened. It's not that we don't do such stories today. There are many people who are doing stories. So when I say that the world and India needs content creators, it needs people who tell real stories. You are a storyteller. And you have to be. Your photographs have to tell the story. आपके एक फ्रेम में आवाज़ निकलनी चाहिए, बोलना चाहिए. अगर आपकी फ्रेम नहीं बोलेगी ना, तो फिर आपकी फोटोग्राफी बेकार है. और ऐसे कई फोटोग्राफर्स हमने देखे होंगे, सक्सेना साहब भी जानते होंगे. ऐसे कई फोटोग्राफ्स हैं, एक फ्रेम बताता है कि पूरी कहानी क्या है. Just like when you want to be an anchor, I'm just asking you to picture this scenario. I was getting ready to do my show on Aaj Tak. 10 p.m. was my show every day. It was called Dastak. 9:20 पे we get an information that there is gang war happening in Mumbai. I was heading the channel. और अगर आप एंकरिंग करने चले जाएंगे तो फिर आप लोगों को क्या बताएंगे कि ये चलाओ, ये काटो, इसके बाइट लो, इससे बात करो. करना पड़ता है, चैनल हेड का यही काम होता है. बट उस समय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था. इट वॉज अ डेडिकेटेड शो. मुझे ही एयर पे जाना है, ऑडियंस के लिए आपको जाना पड़ेगा. सो आई वॉज डूइंग बोथ एट द सेम टाइम. आई वॉज एंकरिंग एंड मैनेजिंग माई चैनल. 9:50 पे पता चला कि इट इज़ नॉट अ गैंग वॉर, इट इज़ अ टेरर अटैक. मुंबई. और अब आप क्या करेंगे एज ए एडिटर, एज एन एंकर? आप वीडियो दिखा नहीं सकते.
क्योंकि अनसेंसर्ड वीडियो आप दिखा नहीं सकते, आप ब्लड नहीं दिखा सकते, गोर नहीं दिखा सकते, आप टेररिस्ट नहीं दिखा सकते, गन फाइट नहीं दिखा सकते, आप लोगों को मरते हुए नहीं दिखा सकते। आपके रिपोर्टर्स लोकेशन पर जब तक पहुँचे हैं, मुंबई अगर आप लोग गए हो कभी, तो अंधेरी से चर्च गेट पहुँचने में 50 मिनट से कम नहीं लगते हैं। फास्टेस्ट इज़ लोकल ट्रेन। लेकिन जब तक सामान लेकर अपने ऑफिस से कोई आदमी पहुंचेगा, और सारे टेलीविजन स्टेशंस के मोस्ट ऑफिसेज आर इन अंधेरी, समवेयर बीच में पड़ता है, कोई नहीं पहुंचा था। तो आपको 50 मिनट बोलना है, आपके पास कोई वीडियो नहीं है, आपके पास कोई और सोर्स नहीं है एक्सेप्ट रिपोर्टर्स फोन, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइन पे आने को तैयार नहीं है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में ही बोलें। आपके शब्द अगर एक भी गलत निकले तो आप जनता को गुमराह करते हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यह है एक एंकर की जिम्मेदारी। सो आर यू अप टू द जॉब? आप लोग को थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, हैवी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। दिस इज लाइफ, फेस करना पड़ेगा। सो बी वाइज। अभी सक्सेना साहब ने आपसे कहा पढ़िए। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इन योर लाइफ। इफ यू डू नॉट रीड एवरी नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर सेल्फ। रीड वॉट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी पढ़िए, फिक्शन पढ़िए भाई, क्या फर्क पड़ता है। मत पढ़िए 24 घंटे न्यूज़, कौन सैचुरेट हो जाएगा इतना पढ़ के। बट रीड सम गुड राइटअप्स, रीड न्यूज़पेपर्स, वैरायटी ऑफ देम। आई कैन बेट ऑन इट, आप में से ज़्यादातर लोगों ने आज 2 पेपर भी नहीं पढ़ा होगा। मैं 11 पेपर रोज पढ़ता हूँ, कवर टू कवर। इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत तुर्रम खाऊं, ये मेरी ज़रूरत है। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो जब मैं न्यूज़ मीटिंग लेता हूँ तो उस समय मैं क्या बोलूँगा लोगों को बनाने के लिए। अगर आप लोग तैयारी करके नहीं आएंगे तो आप लोग को पढ़ाएंगे क्या? तो ये मेरी मजबूरी है कि मैं सारे पेपर्स पढ़ता हूँ, उसके क्लिप्स बनाता हूँ, और मेरे पास आपको डेली मेरी 50 से 70 क्लिप्स की फोल्डर मिलेगी जो मेरे iCloud में है। आपको भी करना पड़ेगा, आज से करना शुरू कीजिए। मेरे पास 1992 से लेकर आज तक का जो भी आप मांगे सब मिल जाएगा। मैं उस समय यूएस घूमने गया था 89 में, अपने पढ़ाई के समय ही। 90,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा था उस समय, एंड इट वॉज अ DOS लैपटॉप जिसकी टोटल स्टोरेज स्पेस वॉज 512 KB। 90,089। आज तकरीबन अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता तो करीबन 90 लाख या 1-1.5 करोड़ तो हो ही गया होता। बट यू हैव टू डू इट। आप लोग के पास तो आज फैसिलिटीज आर सो गुड। आई एम सो हैप्पी दैट वी लिव इन अ स्टेट वेयर यू कैन नाउ डू एनीथिंग। यू सो फ्लेक्सिबल। I can go on and on. I have a news meeting to attend, but I can still postpone it. I would prefer all of you to just put your minds. I don't want to give all these, jangori gyan, ki journalism is this and that. You'll read it in the class. Ask me anything practical that you want, anything that interests you. If I have the information, I'll share with you. And I hope I have made sense till now. Anything, please, go ahead. गुजरात फाइल्स के बारे में आपको पता ही होगा। उसकी BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी गुजरात फाइल्स के नाम से, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी। एंड गुजरात फाइल्स में सीधा सीधा ये स्टेटेड था कि जो ये मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी ने जब वो 2002 में CM थे ये गुजरात के, तब उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम करे थे जो मैं बोलूँगा नहीं, बट मेरे पास है सोर्स। तो उसमें पूरा गुजरात फाइल्स के, मतलब गुजरात फाइल्स में पूरा है,
बट फिर भी उसको बैन कर दिया था. Okay, let me just take it from here. 2002 Gujarat riots, along with a number of my colleagues, I have covered myself. जो अग्रेसिव भीड़ वहाँ पे थी, जो हम लोगों ने देखा है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता. There was violence, and it was real. Now, what the BBC documentary showed was claimed as being true. I don't agree with it. Because nobody, none of us, not a single journalist then knew what really happened. What really happened behind the scenes within the government, nobody knew. Nobody had access, nobody had any information. So it's all guesstimate. It is somebody's version put against somebody else's version and an inference drawn. And this will happen with you every day, my dear friend. Every day. Because all of us have limited action when there is any such violence, especially a communal violence. There are always multiple sides of communal violence. May I ask, do we know exactly what happened in UP in 2013 in the riots? Do we know? Is there a film which has been made? Why does nobody talk about it? There is a book written by a very famous journalist, Mr. M.J. Akbar. He was a minister in the Modi government. MJ was my second editor I worked with in Asian Age. I was handpicked by him. One of the finest journalists I have seen in my life. I have been inspired by him. He wrote a book called Riots. Most of us who are sitting in this room, I can vouch for it, that you would not know that India saw the worst riots between 1978 till 1989 in West Bengal, Bihar, and Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. Yes. Nobody talks about it. Because it is not politically expedient to talk about this. Everybody talks about Sikh riots in India and 2002 riots in India. Did only 2 riots happen in this country? How many riots took place last year? 23, 24. Would you have any idea? Farmers' agitation was last year, and it's an agitation, it was not a riot. Please understand the difference. See, this is what opinions are feeding you and making you believe. I am not defending anyone, nor am I criticizing anyone. I hope that is coming through clearly to you. What I'm trying to say is I'm picking and choosing. I am choosing the fact that you have slightly larger hair, longer hair, you look more stylish. The guy sitting in front of you has a colored outlook. He looks cool. Now I choose which is better for me. I like you, so I'll say, oh, what a lovely personality. I like him. Nothing compared to him. Is it true? That is what is happening with Indian politics. People are picking sides, people are framing stories, people are giving you narratives. This is not journalism. This is not ethical. This is misleading the masses and the people. This is a job of political parties. They are doing it. They always do it. We are not supposed to do it. You are not supposed to do it. But if you become party, you're as good or as tainted as a politician. I hope I have answered your question. सर मेरा नाम ओजस है और मैं BGMC सेकेंड ईयर से. सो सर मेरा क्वेश्चन है, लाइक
कल एक न्यूज़ आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा फैल रही थी कि 15 को कल दुनिया ख़त्म होने वाली है। एंड इस पे मतलब बहुत सारे वो भी बने थे, मीम्स वगैरह भी बने थे। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी न्यूज़ अप्रूव होती कैसे हैं? लाइक मतलब न्यूज़ चैनल बोल देते कि ऐसा होने वाला है, आज तक नहीं बोला था ऐसा। तो सर थोड़ा इस पे अपनी राय रखिए। देखो भाई, हम बहुत पापी लोग हैं। अरे हम तो गाय उड़ा देते हैं अंतरिक्ष में। आप उस समय बहुत छोटे हो गए या शायद पैदा नहीं हुए होगे। एक टीवी चैनल था, उसने गाय उड़ा दी, उड़न तश्तरी आई और गाय लेके जा रही थी, है ना। मैं वहाँ काम भी कर चुका हूँ बाद में, तो उस गाय उड़ाने वाली श्रेणी में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ काम कर चुका हूँ। बिना ड्राइवर की गाड़ी भी चलती है, ठीक है ना। मंदिर में बवाल भी होता है। मैं स्टार न्यूज़ में ही एडिटर था, मेरा ही चैनल दिखा रहा था, इसलिए मैं किसी और का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद अपना नाम ले रहा हूँ। मैं एडिटर था, मजबूरी थी भाई, इतना प्रेशर था नंबर लाने के लिए, तो कुछ तो करना ही था। अब कोई आदमी ड्राइवरलेस गाड़ी दिखा के नंबर ला रहा है, कोई गाय उड़ा रहा है, तो हमने एक मंदिर पकड़ लिया। मंदिर के अंदर रहस्य है। रहस्य क्या था? रहस्य कुछ नहीं था, बस ये था कि मंदिर में एक छोटा तहखाना है। मंदिर जो है वो उत्तराखंड में है, पुराना मंदिर है, उसके चारों तरफ लताएं वताएं सब कुछ थी, तो देखने में भी अजीब लग रहा था। भाई लोगों ने 3 घंटे देखा। तो ऐसे पाप हम लोगों ने बहुत किए हैं। 100 चूहे खाने के बाद सारी बिल्लियां हज को चलती हैं, जैसे मैं हूं, लेकिन चूहे हम लोग सब खाते हैं। I do not want to absolve us as an industry from such horrible presentation of news. This is not what we are paid for. This is not what we should do to this society. But unfortunately, there are certain economic parameters because of which such things happen. I just hope and pray that we are able to get out of this vicious cycle of half-truth, distrust, and lack of faith. I should apologize for it, for my entire fraternity. दुनिया नहीं खत्म हो रही, कोई तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने वाला। फोर्सेबल फ्यूचर में वो हो जाए तो हो जाए, बट किसी ने देखा नहीं है। किंग जोंग उन से आज तक कोई इंडियन जर्नलिस्ट नहीं मिला है, लेकिन सारे टीवी चैनल पर आपको उसके बारे में हजारों शोज देखने को मिलेंगे। I am the only journalist in India who has interviewed President Putin. He has not given an interview to any journalist in India since 2004. But हम लोग सब पुतिन को पता नहीं क्या बना देते हैं। खुद के मेरे चैनल्स पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। I have played golf with the man. He's a fantastic human. Politics के लिए वो क्या करते हैं वो उनका नेशनल इंटरेस्ट है। मुशर्रफ कोई क्या भैंसा खाता था? इट इज क्रेजी। हम लोग यहाँ पे पता नहीं कौन सी दुनिया में आजकल अपने दर्शकों को बना रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने हमें इतना लजीज खाना खिलाया था। आगरा के टॉक्स फेल हो गए थे, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने करण थापर साहब को इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद मेरा नंबर आया था। मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी थे मृत्युंजय कुमार झा, हम दोनों ने मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर में जाकर उनका इंटरव्यू किया था, और उसी दिन वाजपेयी जी का भी इंटरव्यू मैंने किया था। लेकिन ना तो मुशर्रफ साहब ने वाजपेयी जी के बारे में कुछ भी कहा, और ना वाजपेयी जी ने मुशर्रफ साहब के बारे में 1-2 शब्द कहे, जो कि गलत हो। नेता अलग अलग होते हैं, ये हम लोग का काम है, लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज डोंट डू इट। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जो कि आपको इस तरह से साफ साफ बोलेंगे, और वो इसलिए क्योंकि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत कुछ देख लिया है, और अब लगता है कि भाई अल्टीमेटली कभी तो सच बोलेगा आदमी। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग माई फ्रेटर्निटी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग जर्नलिस्ट, आई एम जस्ट सेइंग
that all of us may not be doing the right thing at the right time. We are doing right things, but maybe not all of us. We all need to come together, and so do you. Thank you, sir, for such a valuable session. As we approach the end of today's session, I invite Dr. Yamini Kullar, Associate Professor and Academic Coordinator of DME Media School, to deliver the vote of thanks. Thank you, Ahili. A very good afternoon to all of you. After such informative and insightful session, and we are at the end of it. Sir, we really enjoyed your session in such a simplest and humble way that these are the best words which can describe this session, that you have painted a true picture of this media in front of the students in such a simplest and best possible way. I think they can correlate with themselves. I hope I am not too brutally honest. भाई सब इतना बुरा नहीं है, काला नहीं है. देखो मेरी डायरी सफ़ेद है. I'm sorry. And we did not only talk about the traditional media or TV or radio or news. We talked about digital media also. And I think this generation is very well versed, more worse than us for this kind of media. And the examples, the way the sir communicated with us, I think they all have forced to think in such direction. And I know, sir, that your time is very valuable. And also for the Amrish sir, I am his student. And I know that sir has no time, much time for such activities. But thank you, sir, Ajay sir and Amrish sir, for sparing such time for us and for our students for such insightful sessions. I would also like to thank Dr. Parul for giving us this platform and for such, organizing these kind of sessions for all of us, not for you, for us also, for the management and the other teams also are associated with us. Thank you very much. Thank you very much, sir. Honored to meet you and listen to you.